हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंट्रोडक्शन, जो कि इसमें हम करेंगे आज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स। ओके, सो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. Coordination complex is defined as the central atom and a ligand present in square bracket of coordination compound. जो एटम्स होंगे, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे तो हम उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स. ओके, दैट इज, इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, आप ऐसे ले सकते हो. दैट इज द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स. ओके, now what is the central atom? The atom to which fixed number of ligands are bounded with coordinate bond means जो मेटल के साथ जो प्रेजेंट होगा एटम, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम. ओके, जैसे CN cyanide is a ligand. Okay, cobalt is a ligand, amine is also a ligand. Okay, now what is the ligand? Atom or group of atoms, molecule or ions which donate pair of electrons to central atom and form a dative bond. Okay, जो भी मेटल के साथ प्रेजेंट होंगे और वो डोनेट करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स. नाउ व्हाट इज यूनिडेंटेट लिगेंड? फर्स्ट इज यूनिडेंटेट लिगेंड दैट contain one donor atom, that is amine contain one donor atom, H2O, Cl negative, OH negative. Okay, now what is bidentate ligand? The ligand which contain two donor of atoms. This compound is having a two lone pair of electrons, that is why it is called the bidentate, and it is called the En, represented with En, it is called ethane 1,2-diamine. Now what is polydentate ligand? The ligand which have more than two donor atoms. एग्जाम्पल EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन. दिस इज रिप्रेजेंटेड विद दिस फॉर्मूला. इट्स स्ट्रक्चर इज दिस. ओके, नाउ व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? The ligand which have two donor atom but only one will form bond at one time. मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम तो है, मतलब कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है डोनेट करने के लिए, पर वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो एक के साथ ही बनाएंगे एक टाइम पे. जैसे साइनो, आइसोसाइनो, 92N, 92O. ओके, नाउ व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड? व्हेन बाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड attached to central atom, they form a ring-like structure around central atom called chelate ring. Chelating ligands form more stable complexes than unidentate. Example, जैसे structure बना हुआ है, this is a structure and this is form a ring-like structure. Okay, इसको बोलते हैं chelating ligand. Now what is the coordination polyhedron? The spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom or ion defines the coordination polyhedron about the centralization. For example, octahedral. When amine is present in octahedral, it is called the coordination polyhedron. That is cobalt, amine with the 6 and 3 positive. Okay. Now what is the coordination number? Coordination number is defined as the total number of ligand donor atom bonded with the metal determined by bond and not by pi bond. मतलब ऐसे जो लिगेंड्स अटैच होंगे मेटल के साथ उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल लाइन, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज हमने पढ़ा था कि जो यूनिडेंटेट लिगेंड होता है वो एमीन होता है, जो जिसके पास एक डोनर एटम होता है. So 1 into 6 is 6. So coordination number is 6. ऐसे ही जो En है, it is a bidentate. So 2 into 2 is 4. Okay. Next is EDTA. That is a polydentate ligand. So it is also having 2 or more, but here it is have 2 donor atom. So 2 into 6 is 12. This coordination number is 12. Now what is a counter ion?
जैसे हम ये कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज वी टेक कोबाल्ट NH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl नेगेटिव, जो ये वाला जो एटम अटैच्ड होगा इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। द एनाइन और कैटाइन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू बैलेंस द चार्ज ऑन इट, ओके, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ऑक्सीडेशन नंबर द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, ये सबको पता है, हमने +1 में भी पढ़ा है। जो भी मेटल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, सपोज कोबाल्ट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3, so +3 is the oxidation number. Now what is homolactic complexes? The complexes having one type of ligand, only one type, that is CN is a one type and chloride is a one type. What is heterolactic complexes? The complexes having two different ligands. Suppose कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे ये प्रेजेंट है, इसके साथ अगर H2 भी प्रेजेंट हो, इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक। अगर सिंगल प्रेजेंट हो लिगेंड तो उसको बोलते हैं हम होमोलिप्टिक। अगर 2 प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। सो अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन इन एग्जाम, दैट इज first you have to identify the anion or cation. In a coordination compound, anion also present and cation also present. So first you have to identify the cation. Now next we have to see the ligand, how many ligands are present. Next you have to write the metal and its oxidation number, and at the last you have to write the counter ion. Always counter ion, suppose it is also a cation or anion, but here when you write a nomenclature, so if counter ion is present and it is a 9, you have to write it in the last, okay. Suppose हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल कंपाउंड है, हमने इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि एनाइन क्या है और कैटाइन क्या है। सो क्लोराइड इज ऑलवेज ए नाइन एंड इट इज चार्जेस हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 and this is compound is a positive, this is a cation. So here -2 चार्ज जो है वो यहाँ पे चल जाएगा, मतलब इस कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा। सो इट हैज़ -2 चार्ज, ओके। हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जे 9 क्या है और कैटाइन क्या है। नेक्स्ट वी हैव टू सी दी लिगेंड्स, यहाँ पे 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ये होंगे हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस, ओके। सो here first you have to identify the cation or anion, second we have to see the ligand, third we have to see the metal, that is oxidation number, and last you have to write the counter ion. Its naming is this, that is first you have to write the cation, so tetra amine aqua chlorido cobalt, and you have to write its oxidation number of metal. So its oxidation number we have to calculate by this. Cobalt suppose we take as X, NH is a neutral and HCl is also a neutral, chloride is -1, इसके ऊपर कितना चार्ज है -2, so sorry its charge is +2, okay. So its charge is +2, so X is equals to 2 + 1, that is 3. Its oxidation number is 3, so cobalt is 1 2 3. We write in Roman numbers also, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे काउंटर आयन, दैट इज क्लोराइड, अंडरस्टैंड। सपोज वी टेक एग्जाम्पल, दैट इज ये हमें गिवन है, इसके साथ कोई भी काउंटर आयन नहीं है, हम इसको क्या लेंगे अब एज ए कैटाइन ही लेंगे। सो हम कैटाइन में अगर हमने कैटाइन लिखना है पहले, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है उसका लीगेंड, दैट इज डाइक्लोरिडो, इसको हम बोलते हैं इथेन 1 2 डायमीन। अगर इसके साथ 2 प्रेजेंट हो, सपोज इट इज एज अ 2, सो वी हैव टू राइट दिस बिस, देन इट्स नेम इथेन 1 2 diamine, then write the metal that is cobalt and its oxidation number is 3. So
its naming is this. First you have to see the cation, then you have to write the ligand, then you have to write the metal, then you have to write the oxidation number of metal in Roman numbers. Okay, pause the video and try yourself to write the nomenclature of this compound. I hope आपने सही लिखा होगा. So मैं इसका बता देती हूँ क्या है. हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, केटाइन, एंड दिस इज एनाइन. So in cation you have to see the ligands, that is dichloride. Sorry, it is the same. Dichlorido base ethane 1,2-diamine, then write the counter ion. You try this compound by pausing the video and try yourself. Then I explain you well. So its naming is, that is, first you have to see the cation, that is, it is positive now, and this it is negative. In cation there is no ligand, so write first the its name, that is potassium. Okay, then write the anion. If in anion metal is present, you have to write its name as chromate. इसको हम बोलते हैं क्रोमियम, पर अगर ये एनाइन में प्रेजेंट है एनी मेटल तो इसके हम पीछे लगा देते हैं 8. सो क्रोमेट. सो पोटेशियम, इसको हम बोलते हैं ट्राईऑक्सिलेटो. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सारे लीगेंड और उनके नेम, दैट इज़ न्यूट्रल एंड नेगेटिवली चार्ज. अब वहाँ से जाके ये वाले नेमिंग देख सकते हो. इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेटो. सो इट इज़ हैज़ 3. सो naming is trioxylato, that is now chromate, and its oxidation number you write, okay, by solving the oxidation number. Now if in the 9 part metal is present, so at the end of the metal name write 8. Okay, you try this yourself by pausing the video and check whether it is right or wrong. आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. सो इट्स नेम इज़, दिस इज़ पॉजिटिव, इट्स नेम इज़ hexaamine cobalt has the oxidation number of 3 in Roman numbers. Then write chloride. आई होप आपका सही होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन.